Hello students, how are you? This is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. Today's topic is a very important topic of math. It is a concept of math and the name of the topic is HCF and LCM. This is a topic which we learned in our 6th and 7th standard and बहुत सारे arithmetic के chapters आप नहीं कर सकते, वो questions आप नहीं कर सकते अगर आपको HCF LCM निकालने नहीं आता है. सो वी नो कि मैथ में एचसीएफ एलसीएम निकालना कितना इंपॉर्टेंस है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम. This topic I have divided into 3 categories. In the first, that is today's module, we will learn how to find HCF and LCM. We will learn the concept of the topic. In the coming module, that is in the second module, we will learn how to find the number of factors, sum of the factors which are squares, the factors which are cubes, and all those things. And in the third module, we will learn the questions, the applications of HCF and LCM, questions pertaining to HCF and LCM. So in the today's module, we will learn the concept, how to find HCF and LCM, whether it is a whole number, whether it is a decimal, whether it is a fraction. So basically in today's video, we will learn the concept of HCF and LCM. So let's start with the topic, and first just let me share the screen with you. Now, what we will learn in today's module, we will learn what is factor, what is multiple. We will learn the different methods to find HCF and LCM, and how to find the HCF and LCM of fraction, and how to find the HCF and LCM of decimal. So it's a very important topic, especially LCM हमें बहुत जगह निकालना होता है. For an example, if it is written 3/5 plus 4/15, this you can do if you know how to find the LCM of 5 and 15. तो LCM तो हर fraction में use होता है, and plus HCM and LCM, HCF and LCM हम arithmetic के बहुत सारे chapters में use करने वाले हैं. ठीक है. So HCF का full form, HCF means highest common factor and LCM means least, or you can say lowest common multiple. So HCF में there is a word that is called factor, and LCM में एक word आता है that is multiple. So before we start with HCF and LCM, let's understand कि ये factor क्या होता है and multiple क्या है. So if a number divides another number exactly, leaving no remainder, then the number is called factor of that number, and the number that has been divided is called the multiple. ठीक है. For an example, if I do 21 divided by 7, so we know that 7 3s are 21, so इसमें remainder 0 आ रहा है, and hence we can say that 21 is completely divisible by 7. So in this particular case, we can say that 7 is a factor of 21 and 21 is multiple of 7. ठीक है. Let's take one more example. 12 is completely divisible by 4. Why? Because there is no remainder when we divide 12 by 4. So in this case also we can say that 4 is a factor of 12 and 12 is multiple of 4. Next is 16 divided by 3. If I'll do, then we know that 3 5s are 15. So there is a remainder. So 16 is not completely divisible by 3 because there is a remainder 1. And hence we can say that 3 is not the factor of 16 and 16 is not the multiple of 3. Perfect. I hope आपको समझ में आया होगा कि factor क्या होता है, multiple क्या होता है. Now here I have taken one example as 5 into 4 is equal to 20. So इसमें कौन किसका factor है और कौन किसका multiple है. So 5 is a factor of 20, 4 is a factor of 20, and 20 is multiple of 4 as well as 5. Perfect. Now यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने 2 लिखा है और 2 के अंदर मैंने कुछ numbers लिखे. ये numbers कौन है? Basically here I have written the table of 2, जिसके अंदर so the table of 2 is nothing but the multiple of 2. तो अगर आपको कोई पूछे कि 2 के multiples बताओ तो आपको basically 2 का table बोलना है. Similarly, here 3 के multiples are 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Here I have written all the multiples of 6 till first 10 multiples of 6 are written, and here also I have written the first 7 multiples of
फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, एक चीज आपने नोटिस करी होगी यहाँ पर कि फैक्टर्स जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, बट मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई पूछे कि 2 का मल्टीपल्स क्या होगा तो वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा, बट अगर आपको कोई पूछे कि 6 के फैक्टर्स क्या है, सो दैट इज लिमिटेड। जैसे कि 6 का मल्टीपल ये है, दीज आर द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6, और वो तो जाएंगे इन्फिनिटी तक, बट 6 के फैक्टर्स क्या है? तो द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 6 2 3, ओनली 4 फैक्टर्स ऑफ 6। सो फैक्टर्स आर लिमिटेड, फिक्स होते हैं फैक्टर्स नंबर में, एंड मल्टीपल्स आर टिल इन्फिनिटी। तो आपको किसी को ये नहीं कह सकते कि 6 के मल्टीपल्स का नंबर क्या है। ठीक है, now, there are different methods through which you can find HCF and LCM. Let's understand all the methods. First, we will find the HCF and LCM using the concept. मतलब ये जो word है HCF, उसी से हम HCF निकालने की कोशिश करेंगे। Now, HCF means highest common factor. तो पहले अगर हमें HCF निकालना है 36 and 48 का, तो उनके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे 36 and 48. First, let's write the factors of 36 and 48. 36 के factors कौन से होंगे? So, how to write the factors in such a way कि you don't skip any of the factor. To start with the smallest natural number, that is 1. We all know that 1 is a factor of all the numbers क्योंकि 1 तो सबसे divide हो जाता है. And 1 into 36 gives 36. So 1 and 36 लिखो. Next number 1 के बाद आता है 2. And 36 is completely divisible by 2. And we know that 18 to the 36. So 18 to the ऐसे लिख दो. Similarly 3 into 12 36. 4 into 9 36. 4 के बाद नंबर आता है 5, but 5 is not divisible by 36. So 5 नहीं लिखेंगे. And next is 6 into 6 is divisible by 6 is divisible by 36. So in total 36 के 9 factors है fix. Similarly 48, 148, 224, 316, 4 into 12 48. Once again 5 is not divisible by 48, so 5 is not the factor. Next is 6 8, 7 is not the factor of 48, एंड 8 इज अ फैक्टर ऑफ 48, जो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमने सारे के सारे फैक्टर्स लिख दिए। सो 48 हैज गॉट 10 डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, सो एचसीएफ में ये जो एफ वाला पार्ट है फैक्टर्स, ये हम निकाल चुके। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। इनमें कॉमन क्या है? सो 1 इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, 2 3 दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, एंड 12 कॉमन है। ओके, सो कॉमन फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 फैक्टर्स विच आर कॉमन इन बोथ 36 एंड 48। लेकिन हमें कौन सा निकालना है? हाईएस्ट। इतने भी जितने भी फैक्टर्स है उसमें से सबसे बड़ा कौन है? सो दैट इज 12। सो वी कैन से दैट कि HCF ऑफ 36 एंड 48 इज 12। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले तो हमें दोनों के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 36 एंड 48 के मल्टीपल्स, यानी कि वी हैव टू राइट द टेबल ऑफ 36। 36 1 जार 36, 36 2 जार 72, 36 3 जार 108, 36 4 जार 144, and 36 5 जार 180. So here you can see I have written the first 5 multiple of 36. Similarly, let's write the first 5 multiple of 48. 48 ones are 48, 48 twos are 96, 48 threes are 144, 48 fours are 96 का डबल 192, and 48 fives are 240. ठीक है, so first 5 multiples of 40. Now common multiple क्या है? Here I can see कि common दोनों में है 144, और यही सबसे छोटा है। So we can say कि LCM of 36 and 48 is 144. ये जो डेफिनेशन था ना HCF एंड LCM का फुल फॉर्म, वहां से ही हमने HCF और LCM निकाला है। नेक्स्ट इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे? 36 एंड 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए।
36 को कोई भी ऐसे दो टुकड़े कर दो उसका, तो हम 36 कैन बी रिटर्न एज 9 इंटू 4, सिमिलरली 48 कैन बी रिटर्न एज 12 इंटू 4। ठीक है, ऐसे ही कोई तो दो नंबर से मैंने ब्रेक कर दिया। 9 फर्दर कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 3 एंड 4 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2। सिमिलरली 12 के और टुकड़े करते हैं, तो 12 कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 2 इंटू 2 एंड 4 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2। So basically 36 is nothing but 3 into 3 into 2 into 2, and 48 is nothing but 3 into 4 times 2. So from this we can write 36 is nothing but 2 ka square into 3 ka square, and 48 is 2 raised to 4 into 3. ठीक है, now from this method we can find HCF and LCM together. निकाल सकते हैं दोनों चीज एक साथ में। ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, यू कैन सी हियर द बेस आर ऑल द प्राइम नंबर्स, मतलब इसके और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज फॉर एचसीएफ वी हैव टू टेक द नंबर विच इज द कॉमन बेस एंड वी हैव टू टेक द पावर विच इज लेस। ओके, सो एचसीएफ के लिए 2 स्क्वायर है एंड 2 रेज टू 4 है, सो हियर आई विल राइट 2 एंड हियर द पावर ऑफ 2 is 2 and here the power of 2 is 4, so we have to take the number which is small. So 2 square and 2 raised to 4 में हमें 2 square लेना है। ठीक है, similarly here it is 3 square and 3, so जो पावर छोटा है वो लेना है, so we will write 3. So 4 into 3 that is equal to 12, आ गया HCF 12। LCM के लिए exactly opposite करना है, take the number and take the power which is more. So for LCM 2 स्क्वायर एंड 2 रेज टू 4, तो हम 2 रेज टू 4 को चूज करेंगे क्योंकि वो वाला पावर बड़ा है। 3 स्क्वायर एंड 3 वी हैव टू चूज 3 स्क्वायर, तो 2 रेज टू 4 is 16 and 3 square 9, 16 9s are 144, so we got the same answer 12 and 144. Now the third method to find HCF and LCM 36 and 48, मुझे लग रहा है कि स्कूल में ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी मेथड से HCF LCM निकालते हैं, बिकॉज दिस इज द फास्टेस्ट मेथड एंड इन दिस मेथड यू कैन फाइंड HCF and LCM together. What we will do here, since we are learning right now, so here I will write all the prime numbers only. As of now I am writing all the prime numbers. ठीक है, now 36 and 48, the smallest prime number is 2 and 2 divides 36 and 48 both, so first we will start with 2. 36 डिवाइड बाई 2 18, 48 डिवाइड बाई 2 24, वापस 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 and 12. नाउ दिस 9 is not divisible by 2, so we have to go to the next prime number. 2 के बाद का next prime number is 3 and both these numbers are divisible by 3, so we'll write 3 here. 9 by 3 is 3, 12 by 3 is 4. Now between 3 and 4 now nothing is common, तो HCF का स्टोरी खत्म, यहां से हमें HCF मिल जाएगा। HCF क्या होगा, 2 into 2 into 3, that is nothing but 12. LCM के लिए और आगे जाना है, so 3 and 4 में nothing is common, so now we will divide the number by 3. 3 divided by 3 1, 4 divided by 3 not possible, so we will write 4 as it is. Next 4 से divide करेंगे तो 1 1, so this is our LCM. So LCM is 2 into 2 into 3 into 3 into 4, that is equal to 4 into 4 16 and 16 9s are 144, so answer is 144. ठीक है, so we have learned different methods through which we can find HCF and LCM. अगर आपको HCF और LCM निकालना है तो ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है क्योंकि ये सबसे फास्ट है। Now there is something called as division method. This we use to find the HCF. How to use this method 36 and 48. Okay, ये मेथड जो है ना जनरली बहुत बड़े नंबर्स हो और कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कंफ्यूजिंग नंबर हो, उसके लिए यूज किया जाता है। For the simple number like 36 and 48, this method is not that feasible. Okay, but we should know the method. What we will do, हम 36 and 48 में 48 is big, तो उसको बाहर रखेंगे, 36 को सॉरी उसको अंदर रखेंगे, 36 को यहाँ रखेंगे। So इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड बनाएंगे एंड छोटे नंबर को डिवाइजर बना देंगे। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल डू। नाउ 36 1s are 36, रिमाइंडर इज 12।
अभी जो रिमाइंडर आया है दैट रिमाइंडर बिकम्स डिवाइजर, और ये जो डिवाइजर था ये डिविडेंड बन जाएगा। 12 3 36, तो आ गया रिमाइंडर 0। आपको ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। इस केस में यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ चुका है, सो 12 इज द आंसर। ठीक है, थ्रू विच यू कैन ऑल्सो फाइंड HCF। नाउ express 1095 1168 in its simplest form. So basically 1095 divided by 1168, this is what we have to do. कैसे करेंगे? इन दोनों में कॉमन क्या है? तो हम HCF निकाल लेते हैं इसका। Sixteen minus 9 7, so it is 73. Now 73, which is the remainder, it now becomes a divisor. 1095 डिविडेंड हो जाएगा 73 के टेबल में 109, so 1365। वी नो दैट कि 36.5 का डबल 73 होता है, यानी कि 73 इंटू 5 इज 365। Okay, so this finally we got the remainder is 0, so this is the highest common factor। यानी कि ये दोनों नंबर जो है 1095 एंड 1168, ये दोनों नंबर डिवाइड होते होंगे 73 से। नाउ 1095 को 73 से डिवाइड कर रहा है, तो वी नो आंसर आ रहा है 15, so this has to be एक एक्स्ट्रा 16, so 15/16 is the answer। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऐसा भी कुछ कर सकते थे कि 1168 माइनस 1095 कर दो, सो दिस इज 3 एंड 73, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 73 है। इट मींस दैट इफ 73 is divisible by 1095, then 73 has to be divisible by 1168 also. To this way also you can get the answer। Next, find the HCF of this three number 513 1134 1215। ठीक है, इसे कैसे करेंगे? नाउ दिस नंबर्स आर, एक काम करते हैं, पहले तो अपना डिवीजन मेथड यूज करते हैं। 513, so this is addition is 9, we know that these numbers are not divisible by 2, so we'll go to the next number। here the addition is 9, 1134 का addition is 9 and 1215 का addition is also 9, so all these numbers are divisible by 9। तो पहले तो 9 से डिवाइड कर देते हैं, so 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 and 57, 223, 254, 226 एंड 1215 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 131, सो 3 एंड 35। ओके, सो 57, 135 एंड 226। 57 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, बिकॉज 19 इंटू 3 इज 57, बट here the addition is 10, so this number is not divisible by 3, and and this is divisible by 3, but ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और वी नो कि 135 के 19 के टेबल में 135 भी नहीं आता है, सो आगे कुछ और भी पॉसिबल नहीं है, सो द HCF हियर इज 9। वेट, जस्ट लेट मी सी एक बार, 8 और 9, 6 + 4 10, sorry, this is 126, not 226, 123 5, हाँ, this is 126। okay, so this numbers, all these numbers are now divisible by 3 also, तो आगे और 3 से डिवाइड करते हैं, so 19, 126 को डिवाइड करेंगे 3 से, so it is 42, and 135 को 3 से डिवाइड करेंगे, so it is 45, 45 3s are 135, so 45। 19, 42, 45 में nothing is common, so HCF is 9 into 3, that is equal to 27 is the HCF। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, सेकंड मेथड, यू कुड हैव डन लाइक दिस, 1215 डिवाइड बाय 1134, इसको डिवाइड करेंगे, सो 1134, 5 minus 4 1, 11 minus 3 is 8, so this is 81।
324. So 81 fours are 324. So remainder is 0. It means कि इन दोनों का HCF 81 होता है. क्या होता है इन दोनों का HCF is 81. But we have to find three numbers. तीन नंबर का HCF निकालना है. So 513 डिवाइड बाय 81 करेंगे. So 81 into 6 is 486. So 6 से हो जाएगा डिवाइड 486. 13 6 आर 13 में से 6 गया तो 7, 50 में से 27. अभी 81 ले लेंगे. So 27 3s are 81. The remainder is 0. So finally 27 is the HCF. Now find the HCF and LCM of the number 3.6 and 0.48. Now here the problem is that this is decimal. So initially since we have to solve the question, तो हम हमारे convenience के लिए decimal हटा देते हैं. So what we will do, we will multiply both the number by 100 to get rid of the decimal. So 3.6 into 100 becomes 360 and 0.48 into 100 becomes 48. So what we will do, we will find the HCF and LCM of 360 and 48. So I will use this method. Now 360 and 48, we know that both are divisible by 12. इसको 12 से divide करेंगे 30, इसको 12 से divide करेंगे 4. Next is 2. So 15, 2. Now nothing is common. So this is the HCF. HCF is equal to 12 into 2, 24. And what about LCM? LCM is 12 into 2, 24 and 15 into 2. ये पूरे का multiplication is LCM. 15 2s are 30. So 24 into 30, 720. But this is not the HCF and LCM. क्यों? क्योंकि हमने this is not the number. 360 and 48 का HCF LCM नहीं निकालना था, हमें तो इनका HCF LCM निकालना था. तो हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया था. So once again we have to divide it by 100. So 24 divided by 100 is 0.24 and this is 7.2. So HCF is 0.24 and LCM is 7.2. Okay. So what we learned here, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उससे हमने क्या क्या सीखा देख लेते हैं. Here I have written the definition of HCF and LCM. HCF of two or more prime number is always 1. Prime numbers कौन से number होते हैं? So prime numbers are those numbers who do not have any factor except 1 and except itself. So basically prime number के कोई factors नहीं होते. एक तो वो खुद होता है, एक 1 होता है, उसके अलावा they don't have any other factors. तो जब factors ही नहीं है तो common factor कहाँ से आएगा? And hence prime number का HCF is always 1. ठीक है. और अगर आपको उनका LCM निकालना है प्राइम नंबर का, तो LCM is always the product of those number. Why it is like this? This is because कि HCF into LCM is nothing but the product of numbers. ठीक है. This is nothing but the product of numbers. Now in case of prime number HCF is 1, तो ये value 1 हो गई. So can I say LCM is nothing but the product of numbers? Similarly, HCF of two or more number is always less than or equal to the numbers. For an example, अभी हमने HCF और LCM निकाला था किसका? 36 and 48 का. HCF you can, आपको पता है कि HCF आया था 12 और LCM आया था 144. Now HCF can never be greater than the number. So अगर नंबर 36 and 48 है तो इनका HCF कभी भी 36 के ऊपर तो हो ही नहीं सकता. Similarly, LCM can never be smaller than the number. आप सोचो खुद ही कि अगर हम 7 का टेबल बोल रहे हैं, 7 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं, तो मल्टीपल तो उनसे 7 से ज्यादा ही होंगे. So LCM is always greater than the number or maybe equal to the number, but it can never be smaller than the number. So 36 and 48 का LCM कभी भी 48 से छोटा हो ही नहीं सकता.
Once again, HCF is always the multiple of, sorry, HCF is always the factor of LCM, and LCM is always the multiple of HCF. Very, very important. Please write this in your book that HCF is a factor of LCM and LCM is a multiple of HCF. So HCF of prime number is always 1. HCF of co-prime number is also 1. Why? Because what is a co-prime number? Co-prime numbers are those numbers who do not have any common factor. तो जब कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है तो आएगा क्या? तो 1 के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता. HCF is always the factor of LCM. HCF is always less than or equal to LCM. And this is very, very important formula. HCF into LCM is equal to the product of numbers. Note down all these things in your book. Video को pause करो और ये सब लिख दो. This is very, very important. Now, let's find the HCF and LCM of 7 and 11. Now, 7 and 11 both are prime numbers. So, HCF has to be 1. And LCM इस केस में क्या होगा? Product of numbers that is equal to 77. Similarly, 9 and 11, they are not prime numbers, but they are co-prime numbers. So once again, here the HCF is 1 and LCM is nothing but the product of number, that is 99. Now, how to find the HCF and LCM? तो अभी तो हमने बहुत सारे methods देखे to find the HCF and LCM. But if the numbers are small, then we are not going to use any of these methods to find the HCF and LCM. HCF और LCM निकालना के लिए मेथड आप तभी यूज करोगे when the numbers are big. छोटे नंबर्स के लिए तो हम ऑब्जर्वेशन से ही निकालेंगे आंसर. कोई भी मेथड यूज नहीं करेंगे. फॉर एन एग्जांपल 2, 3, 4, 6 का HCF और LCM क्या होगा? Now here the smallest number is 2, so HCF can not be greater than 2. तो HCF या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है. But 3 is not divisible by 2, so 2 नहीं होगा. So answer is 1 only. Similarly, LCM 6 से छोटा नहीं हो सकता, and 6 is a multiple of 2. 6 is multiple of 3. तो 2 and 3 को तो आप इग्नोर करें. So just concentrate on 4 and 6 and how to find its LCM. 2, 3 को इग्नोर कर दो क्योंकि both are factors of 6. ठीक है, तो उसके बगैर भी आंसर आ जाएगा. Now, how to find the LCM of 4 and 6? तो इसके लिए 6 का टेबल बोलो. 6 ones are 6. 4 के टेबल में 6 आता है? नहीं. 6 twos are 12. 4 के टेबल में 12 आता है? Yes. So LCM is 12. Next, find the HCF and LCM of 5, 10, 15, 40. HCF can't be greater than 5, and 5 is a factor of 10, factor of 15, factor of 40. So HCF is confirmed, it is 5. Similarly, what about LCM? Now, 5 is a factor of 40, तो 5 को इग्नोर कर सकते हो. 10 is a factor of 40, so 10 को भी इग्नोर करें. 15 is not a factor of 40, तो 15 को इग्नोर नहीं कर सकते. So we just need to find the LCM of 15 and 40. बड़ा टेबल 40 है तो 40 का टेबल बोलेंगे. 40 ones are 40. 15 is not divisible by 40. 42s are 80. 15 is not divisible by 80. 43s are 120. Yes, 15 के टेबल में 120 आता है. So LCM is equal to 120. Next. 24, 36, 54. How to find its HCF and LCM? So here, since the numbers are big, 54 का टेबल आता नहीं है. So we will use the method to find the HCF and LCM. So let's solve this question. 24, 36, 54 में ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो सबको डिवाइड कर देता है? So I can see that the number is 6. So you can straight away start with 6. So 4, 6, 9. Now 4, 6, 9 में nothing is common. So HCF का स्टोरी खत्म. HCF is 6.
नाउ एलसीएम के लिए क्या करोगे? 4 6 9 में नथिंग इज कॉमन, तो हम क्या करेंगे, दो दो का पैर बना के चेक करेंगे। 4 and 6 में 2 इज कॉमन, तो 2 बाहर ले लेते हैं, तो दिस इज 2 3 9। 3 and 9 में 3 इज कॉमन, सो टेक 3 आउट। ओके, नाउ 2 1 3 में नथिंग इज कॉमन, सो जस्ट multiply all this thing. 6 into 2 12, 12 3s are 36, and 2 into 1 into 3 is 6, so it is 36 into 6। 36 का क्यूब होता है 216, so answer is 216। Next, find the HCF of this. Now here you can see that this is 2 raised to 3 and 2 raised to 4, so we have to take the power which is less, so we will take 2 raised to 3। तो ये 2 का स्टोरी खत्म। Here it is 3 raised to 4 and 3 square, take the power which is less, 3 square। This is 5 raised to 5 and 5, take the power which is less, this is the answer, 8 into 9 into 5। once again 8 into 9 into 5 कैसे करोगे, 72 into 5 करोगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिर 72 into 5 करने नहीं आता, so don't do that, do this 8 into 5 40, so 40 into 9 is equal to 360। next, find the LCM of, अच्छा इसमें अगर हमें एलसीएम निकालना होता इस वाले क्वेश्चन में, तो कैसे निकालते एलसीएम? 2 raised to 3 and 2 raised to 4, so take 2 raised to 4। 3 raised to 4 and 3 square, so we have to take the power which is big, so 3 raised to 4। 5 raised to 5 and 5 में 5 raised to 5, take the power which is big। ओके, अभी देखिए क्या बच गया, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 13 बचा, तो उसको भी डाल देना है। एलसीएम में जो बाकी का जो भी चीज बच गया वो हर चीज आपको डाल देनी है, एचसीएफ में वो नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। सो वन नंबर इज 2 raised to 5 into 3 square into 5 cube। okay, and here it is 2 raised to 4, but here it is 57, and 57 is not a prime number, तो आप जो भी नंबर्स लिखोगे ना उसको टुकड़ा करके लिखोगे। so 57 can be written as 19 into 3, so we will write 19 into 3 and 13। always ensure कि ये जो बेस होता है ना, this has to be a prime number, this has to be a prime number। जैसे कि यहाँ पर 57 प्राइम नंबर नहीं था, तो हमने उसे ब्रेक कर दिया 19 into 3 में। now how to find LCM? 2 raised to 5, 2 raised to 4, so we have to take 2 raised to 5। 3 square and 3, so take 3 square। 5 क्यूब सिर्फ यहां पर है तो वो लेना पड़ेगा, बाकी का हर चीज डाल दो, 19 डालो 13 डालो, so option number 4 is the correct answer। next, find HCF of this। this is one number, this is second, and this is third one। इसका निकालना है HCF, तो वंस अगेन इसके टुकड़े ही करने पड़ेंगे। सो 4 into 27 into 3125, 4 can be written as 2 square, 27 can be written as 3 cube, and 3125, so we know that कि 625 into 5 कितना होता है, yes this is 3125, और 625 क्या है, 625 is 5 raised to 4, so basically 3125 is 5 raised to 5। this is one number, this is the second number, ये second number है, इसके भी टुकड़े करो। 8 can be written as 2 cube, 9 can be written as 3 square, 25 5 square, 7 as it is, last one। 16 can be written as 2 raised to 4, 81 can be written as 3 raised to 4, 5 5 only 11, and 49 can be written as 7 square। ठीक है, we have to find its HCF।
So 2 square, 2 cube, 2 raised to 4. So we have to take 2 square. 3 cube, 3 square, 3 raised to 4. So take 3 square. 5 raised to 5, 5 square and 5. So we have to take 5. So answer is 4 into 9 into 5. ठीक है 4 into 5 20, 20 into 9 is 180. So this is the answer. हाँ अगर इसमें एलसीएम निकालने पूछा होता तो क्या करते? सो 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 रेज टू 4 में वी हैव टू टेक 2 रेज टू 4. 3 क्यूब 3 स्क्वायर 3 रेज टू 4 टेक 3 रेज टू 4. 5 रेज टू 5 5 स्क्वायर एंड 5 में वी हैव टू टेक 5 रेज टू 5. तो देखो 2 का स्टोरी खत्म, 5 का 2 3 5 का स्टोरी खत्म. बचा क्या? हियर इट इज 7 एंड हियर इट इज 7 स्क्वायर, सो टेक 7 स्क्वायर. तो 7 का स्टोरी ओवर, बचा 11. So this is how we can find the LCM. Now, how to find the HCF and LCM of a fraction? Write down this formula. HCF of fraction is HCF of numerator divided by LCM of denominator. और अगर LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM लो और डिनोमिनेटर का HCF. जो भी चीज आपको निकालनी है, HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF, LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM. Okay, so here some numbers are given. 1 by 4, 5 by 8, 5 by 16 and 15 by 32. Find its LCM. तो LCM के लिए क्या करोगे? LCM of numerator divided by HCF of denominator. न्यूमरेटर में कौन कौन बैठे हैं नंबर? सो इट इज 1, 5, 5 and 15. Okay. So LCM of 1, 5, 5 and 15, by observation we can say कि since 15 is multiple of all this number, so 15 is the LCM, and 4 is a factor of 8, 16 and 32, so 4 is the HCF. So answer is option 4, 15 by 4. ठीक है. हाँ अगर इसमें LCM की जगह पे HCF पूछा होता, so what we would have done, उल्टा हो जाता ये. HCF of numerator and LCM of denominator. तो आंसर क्या होता? HCF of 1, 5, 5 and 15. Now HCF can't be greater than 1, so this has to be 1. And LCM में 32 is multiple of all this number, so answer is 1 by 32 is the HCF. And this is the same question. Now, this slide is very, very important. Product of two co-prime number is 117. So what should be the LCM and HCF? Now we know that since both the numbers are prime numbers, so HCF has to be 1 and LCM is nothing but the product of number itself. So it is 117. Next, HCF of two number is 8. Which of the following can't be the LCM? दो नंबर का HCF कितना है? 8 है. So definitely now we know that कि LCM is multiple of HCF. So 24 is multiple of 8, तो ये possible है. 48 is multiple of 8, so this is also possible. 56 is multiple of 8, so this is also possible, but 60 is not the multiple of 8. So answer is option D. Next, find the number of pairs which has HCF 16 and LCM 126. How many such pair exist? मतलब आपको ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिनका HCF 16 होता है एंड LCM 126 होते हैं. ऐसे कितने नंबर्स के पैर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? तो आंसर इज HCF should always be the factor of LCM and 116 के टेबल में 126 नहीं आता है.
126 इज नॉट डिविजिबल बाय 16, तो ऐसे कोई नंबर हो ही नहीं सकता जिसका HCF 16 हो और LCM 126 हो. इट इज नॉट पॉसिबल. तो आंसर इज नो सच पेयर exists. So I hope you have understood this particular section. और आपको ये चैप्टर अगर समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड उनको सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आपको मेरे फ्यूचर के वीडियोस भी मिलते रहेंगे. एंड कीप ऑन लर्निंग मैथ बिकॉज मैथ इज इजी. थैंक यू.